तो क्या आप भी किसी बड़े न्यूज़ आउटलेट को अपना ओपिनियन एडिटोरियल सबमिट करवाना चाहते हैं और उधर पब्लिश होना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसको एंड तक देखें। इसमें मैं सारा वो प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा जिसके थ्रू मैं गुज़रता हूँ जब भी मैं कोई एक ओपेड लिखता हूँ और उसको पब्लिश करवाता हूँ। ओपेड है क्या? ओपेड इज़ बेसिकली, अगर मैं इसका आपको फुल फॉर्म बताऊँ तो ये ओपिनियन एडिटोरियल है। इसमें आप किसी भी रीसेंट इवेंट और इवन इन सम केसेस किसी हिस्टोरिकल इवेंट को उठाते हैं और उसके बारे में 700 से 800 वर्ड्स, जो कि एक स्टैंडर्ड है, कुछ इससे कम वर्ड्स पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ हैं वो अप टू 1200 वर्ड्स तक मांगते हैं। लेकिन जो यूजुअल रेंज है दैट इज़ बिटवीन 700 टू 800 वर्ड्स। इन 700 से 800 वर्ड्स के दरमियान आपने अपना उस हिस्टोरिकल इवेंट या उस करंट अफेयर्स का जो इवेंट है उसके बारे में अपना ओपिनियन देना होता है, अपनी राय देनी होती है। सो मोस्ट ऑफ दीज ओपेड्स आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन ये मेडिकल की फील्ड में भी हो सकते हैं इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये अपनी अच्छी सीवी बिल्ड करने में ओपेड्स काफ़ी हेल्प करते हैं। लाइक आई एम एन आयर स्टूडेंट, अगर मुझे फ्यूचर में कहीं अप्लाई करना है तो एंड इफ़ आई हैव सम ओपेड्स ऑन माई सीवी और मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है तो दैट विल डेफिनेटली बूस्ट माई चांसेस टू एक्वायर दैट जॉब और अपॉर्चुनिटी। लेकिन मोस्टली हम इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हम इस प्रोसेस को शुरू कैसे करें। तो टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड अ टॉपिक। लाइक आई रोट एन ओपेड, जिसको मैं इस वीडियो में एग्जांपल भी लेके चलूँगा, ऑन ऐमान अल ज़वाहिरीज़ किलिंग। तो वो टॉपिक उस वक्त ट्रेंडिंग पे था। जिस रात ऐमान अल ज़वाहिरी की किलिंग को कंफर्म किया जो बाइडन ने, उसी दिन सुबह उठ के मैंने वो ओपेड लिखा, क्योंकि आई न्यू कि दिस इशू इज़ टाइम सेंसिटिव। अगर मैं एक वीक बाद लिखता तो उसका वो इम्पेक्ट ना होता, या जिनको मैंने सबमिट किया था वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते। वट आई डिड, आई केप्ट टाइमलाइन इन माई माइंड, और मैंने उसके अंदर अंदर उसको सबमिट करवाया। हाउ डू यू फाइंड द ट्रेंडिंग टॉपिक्स या जो करंट टॉपिक्स होते हैं? सिंपली यू कैन गो ऑन गूगल। अच्छा, इसमें आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। लाइक मेरा इंटरेस्ट इज़ इन टेररिज्म एंड मिलिटेंसी एंड ऑल दैट। बट इफ़ we search about South Asia, let's say South Asia current affairs, you can simply Google these issues, or Twitter is a big help for finding such issues or current affairs. So here you can see India, Pakistan, everything, and ये आप साउथ एशिया में जो जो ट्रेंड कर रहा है वो आपके सामने आ जाएगा. So once you have decided a topic, like at that time when I opened the Twitter in the morning, that's the first thing I do in the morning, तो उधर ज़वाहिरी was on trending. I got that topic, I made an outline in my mind, what I wanted to write, how I wanted to write, and where I have to submit this piece. Everything related to that op-ed I had already imagined in my mind. Then if I show you that op-ed, like once you have decided the topic, then you have just to do a basic research, because it is not a feature article or a research paper. It is a simple opinion editorial which requires minimum research, maximum opinion, and the articulation of your argument. That matters the most. So if I show you my op-ed, Zawahiri is gone but not the terrorism. So the most important thing about any op-ed or even a blog or a simple article is its first line, which we call a hook, and the first paragraph. कोई भी एक जो आम रीडर है वो अगर वो आपके पहले पैराग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं हुआ आपके op-ed में तो वो नहीं पढ़ेगा, वो उधर से ही बैक स्पेस मारेगा और he will just leave that page where your article is published. So you have to catch the attention of readers in first sentence and in first paragraph.
Like here my first sentence is actually very weak, but my first paragraph is very strong. That's why I had readers in the first paragraph of my op-ed. और यही पैराग्राफ होता है जो कि एक जिस फ़र्ज़ करें आप किसी न्यूज़ आउटलेट को भेज रहे हैं तो उसकी जो एडिटोरियल टीम है वो भी पहले पैराग्राफ को देख के ही जज करेगी, क्योंकि उनके पास रोज़ हज़ारों में सबमिशंस आ रही होती हैं। तो आपका पहला लाइन और पहला पैराग्राफ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो वंस यू हैव अ बेटर paragraph or a better first line that we call a hook, then you have a better chances of getting published. Here so this is about the hook. Then there is body text. What is your argument? अच्छा, आपने हुक में भी अपना आर्गूमेंट बेसिक बता देना होता है। लाइक मेरा आर्गूमेंट ये था, द फैक्ट दैट वी शुड रियलाइज is that this event might end Al-Qaeda but not the terrorism. This was my argument, and if you notice a bit, might end, not must end or can end. So that matters a lot. Language actually matters a lot. Those who are students of IR or political science have a better idea of this. So then here comes your body text, आपका सारा argument, उसको सपोर्ट करने वाला मटेरियल। आप अगर इस ऑपेड का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इफ़ यू वांट टू रीड इट, ये सारा आ जाएगा। एंड पे पैराग्राफ, जो आखिरी पैराग्राफ होगा, दैट इज़ योर कंक्लूजन। नाउ अगेन दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, बिकॉज इफ़ यू हैव रिटन अ ग्रेट ऑपेड विद अ ग्रेट हुक बट यू कांट कंक्लूड quite well, it is a downside of your writing style or whatever you call it. So you have to focus on introductory paragraph and conclusion the most. ये दो पैराग्राफ सबसे अहम होते हैं आपके op-ed पे. So once you have written the op-ed, now comes the matter of submission. How do you submit an op-ed? Okay, let's start from the very top tier. If I search New York Times, by the way, New York Times have rejected my op-eds twice. Yeah, that happens. Don't take rejections on your heart. Achha, if I write New York Times submissions, then if I open this first link, if I open this link, here you can see उन्होंने पूरी सबमिशन गाइडलाइंस दी हुई हैं. सो हाउ डू आई सबमिट, इधर इन्होंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसकी गाइडलाइंस पढ़ लें. यू जस्ट हैव टू फिल दिस फॉर्म दैट इज लोडिंग राइट नाउ. यस, यू जस्ट हैव टू फिल दिस फॉर्म. इस चीज़ का ख्याल रखना है. ग्लोबल अफेयर्स और पॉलिटिक्स अमेरिकन पॉलिटिक्स है. इधर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का आर्टिकल ना दे देना और अदर पॉलिटिक्स. और अगर ग्लोबल अफेयर लाइक टेररिज्म और समथिंग रिलेटेड टू दैट कम्स अंडर ग्लोबल अफेयर. और वो जो मैं बात कर रहा था कि नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस और हायर स्टूडेंट बट ऑल्सो अदर्स, वो ये चीज़ें नीचे आप 4-5 जो कैटेगरीज हैं वो देख सकते हो. इधर आपकी वो सबमिशन सारी जो आपने 700-800 वर्ड लिखे, हाँ 800 वर्ड से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना इफ़ यू आर गोइंग फॉर बिग आउटलेट्स. नेक्स्ट कम वाशिंगटन पोस्ट सबमिशन. इनका सिस्टम सबसे इजी है सबमिट करवाने का, वेरी इजी. और ये आपको विद इन 6 to 7 आवर्स रिटर्न मेल भी आपको आ जाती है कि इफ़ योर op-ed हैज़ बीन अप्रूव्ड और नॉट. कम्स टू वाशिंगटन पोस्ट, ये इनकी सारी इधर आपकी सबमिशन जाएगी. मैक्सिमम लेंथ 800 वर्ड्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर. नेक्स्ट कम्स द डिप्लोमेट. नाउ डिप्लोमेट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन एशिया पैसिफिक और वी नाउ कॉल इट इंडो पैसिफिक. Diplomat is another good option if you have written something about Indo-Pacific. Now where I published my op-ed, because I am new to writing,
तो मैंने इतनी ऊंची छलांग मारी है, उसमें फेल भी हुआ हूँ, लेकिन अभी मैंने ये हरकतें छोड़ दी। सो आई वेंट to this news outlet Global Village Space. If I opened its submission guidelines, here, writer submission guidelines, you just have to mail Global Village Space. They don't have any form, unlike Washington Post or New York Times और द डिप्लोमेट का भी फॉर्म है। और इंटरेस्टिंगली डिप्लोमेट आपको पे भी करती है इफ़ यू सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ रिन्यूमरेशन। दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग अबाउट द डिप्लोमेट। ओके, सो इधर इन्होंने मेल दी होगी, कितने गई, यस, हेयर इज़ द ईमेल where you have to mail your op-ed. Now if I show you how I mailed my op-ed, so here is the op-ed that I mailed to GVS. ये आपका सबमिशन गाइडलाइंस में भी सब इसके बारे में मिल जाएगा कि हाउ यू हैव टू मेल दिस op-ed। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लाइक यू हैव टू राइट द टाइटल, और जो मेल का सब्जेक्ट है दैट हैज़ टू बी लाइक दिस, op-ed submission title, or if your op-ed is time sensitive then write time sensitive in parentheses. So text of the submission जो आपका सारा op-ed होगा वो बॉडी मेल में आ जाएगा। फिर उनके कुछ इस तरह की रिटर्न ईमेल आएगी जिसमें वो आपको बताएंगे कि आपका अगर op-ed एक्सेप्ट हुआ है तो वो पब्लिश कर देंगे और आपको एक लिंक भेज देंगे, और अगर आपका एक op-ed पब्लिश नहीं हुआ तो सिंपली आपसे माफ़ी मांगेंगे कि भाईजान अगली बार दोबारा सबमिट करना, इस बार इट वाज नॉट अप टू आवर स्टैंडर्ड्स। सो दिस इज़ ए ब्रीफ प्रोसेस ऑफ हाउ यू सबमिट एन op-ed टू सम न्यूज़ आउटलेट, हाउ यू राइट इट, और जो इसमें चीज़ें मैटर करती हैं। इफ़ आई गिव यू अ रीकैप, यू हैव टू सिलेक्ट अ टॉपिक दैट इज़ हॉट व्हेन यू आर राइटिंग। Second, you have to write a good hook, actually an excellent hook or first paragraph. You have to conclude that op-ed well. You have to choose the news outlet that you want to pitch very wisely because of competition and your writing style and your experience. And then you have to follow all the submission guidelines, and you have to follow the process of submission properly. These are some things that you need to keep in mind while writing and publishing an op-ed. So that's all for today. Like this video if I managed to help you in any way. Thank you.